single state examination towards continuous and comprehensive evaluation. I think I have discussed about there should be less focus on the summative assessment. So high stake examination means uh, that's the focus on the summative evaluation. There should be less focus on the summative evaluation, rather there should be more focus on the continuous and comprehensive evaluation. Then common entrance examination for admission to, and that is what we are focusing on in our curriculum also. Common entrance examination for admission to higher education institution will be set up by NTA, means National Testing Agency. That is what is envisioned in NAP 2020 document. So it means it is visualized that there would not be separate examination for different purposes. Why students, suppose I am giving the examination for polytechnic entrance and medical entrance and other things. So there would be a common entrance test for that. That is what is envisaged in the NAP 2020 document. There are so many things which are written, maybe with the time. Okay, maybe with the time. Some policy modifications may be there. Okay, so it always happens. So maybe whatever is written in NAP 2020 document, maybe after some time there can be certain changes based on the implementation. It can happen. I'm just suggesting. Then the other document is framework for credit transfer, National Credit Framework. I think the first draft came in April 2022, and after that the revised or the final version it came in September 23. The very important assessment reforms concept are assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning, and assessment before learning. I think we are using this concept means assessment for learning. Assessment for learning means assessment for learning means, what do you mean by assessment for learning? Formative assessment, progressive assessment. Okay, so there is a lot of focus on the formative assessment when we are talking about the outcome based education. There is a less focus on assessment of learning. Assessment of learning means summative assessment. So there is a less focus on the summative assessment. Then assessment as learning means self-learning. Okay, self-learning is very important because as I gave you the example of the rubric. So different criteria students will be again assess themselves and that on, suppose in criteria number 1, where do I stand on the rating scale? Whether I am poor or good or very good or excellent. On criteria number 2 I am excellent, but on criteria number 3 I am poor or fair. So I need to improve from poor or fair to very good. So the student can do the self-assessment. Even rubric is very helpful from the point of instruction, uniform instruction by all the teachers. If the rubric is valid, is nicely prepared. Even it is good for by the students also because students will be able to assess themselves and will be able to improve their learning. So assessment for learning, assessment as learning, that is very important. Self-learning, and then assessment before learning. What do you mean by the assessment before learning? It's a diagnostic learning. Okay, it's a diagnostic learning. It means when you start a class, you need to know what my students know. Okay, so you have to start. So you can identify some of the learning gaps. Okay, so for some of the learning gaps, and based on the learning gaps, you can modify your session, you can mold your session, you can prepare your session. So these are the concepts which need to be integrated in the curriculum and which is integrated in our MSBE curriculum. Then ensuring reliability, validity and objectivity in assessment. Very important thing. I think I have discussed this because reliability, very important.
there should be reliability in the assessment. If you assess one copy today, and if you assess the same copy after 10 days, and if the same copy is assessed by another teacher or another teacher, then the marks should be same. Okay, sometimes there is a lot of variation when students apply for revaluation. This should not be there. It means your system is not reliable. Okay, if you prepare the rubric, if you do the specific things, it will not be there. The question should be very specific. It should be valid questions. Okay, if you ask questions like write short note on, explain this, it means that you don't know what should be the length and depth of the answer. Okay, what really you are asking, you don't know. Sometimes you as an assessor, you are influenced by the style, writing style of a student. Sometimes you are influenced by the handwriting of a student. Sometimes you are influenced by the how much he has written. Got the point? So all these things are factors are really affecting the reliability. Okay. So your question should be very specific with distribution of marks. Then only you can think about the reliability. Validity means it should be as per the requirement of the CEOs. It should be as per the requirement of whatever CEOs you have identified for the particular course. Okay. Use specificity. I said when we are talking about the outcome-based education, there is no term like general in the. It should be removed from our mind. We should not talk any general thing. We should be very, very, very specific when we are dealing with the students. Okay. If you will be specific, you will get specific answers. We just see the CBSE system. Even the students, they are getting 99% pass in English also, because the question papers are set in such a way that they can score very good marks. Okay, so the questions are specific, answers are specific. There is no need of more number of supplementary copies. As earlier we used to think that if he is taking so many supplementary copies, means he is writing more. He will be the merit holder. Got the point? Then use of appropriate tool of assessment for cognitive, psychomotor and affective domain. Very important thing. Suppose we have to do the cognitive assessment, theoretical assessment, we are using different tools. We are not using the valid tool, which is very important. If we have to assess the practicals, then we are just asking, then we are not using the appropriate tool which is really required for the assessment of the practical skills. If you have to assess the soft skills, this attitude, many other things, we are not using the right tool which is really very, very important. Okay, so the use of right tool for assessment of the cognitive, psychomotor and affective domain means theory, practical, soft skills really very, very important. For affective domain or the soft skills, you cannot just assess in just one stroke, not possible. You have to observe your student on number of incidents based on the incidental record, then only you will be able to assess your students. You should not tag your student as a bad student or good student just based on one or two interactions, or maybe because of his some problems. Okay, that is really very, very important. I think rubric-based assessment I have already discussed, performance and skill-based assessment I have already discussed. Uh, then reforms in certification. If you are talking about outcome-based education, why should not be the certification should be in the form of outcomes? Our mark sheet should also be in the form of outcomes. Only outcomes should be written by marks. Got the point? But we cannot drastically shift. Maybe in the times to come, we will have certification in that form. Okay? So that is one thing. We can have certification in many ways, problem based, outcome based, competency based, whatever. Assessment of industrial training, lab work, seminar, which is a very important thing as far as outcome based curriculum is concerned. There's a guidelines need to be prepared for that. Because industrial training or industrial visit or internship is not a picnic.
We just arrange the big industrial training and visit without any purpose. Okay, so that has to be well planned, well discussed with a purpose, and that purpose should be monitored, and the outcome of that purpose should be evaluated. That is really very, very important. And it should be based on the curriculum analysis, as I discussed earlier. What are the topics which has to be dealt by the industrial training or industrial visit or whatever other things. Then National Assessment Center, that is also visualized in the NEP 2020 document. PARAK, that is also visualized. Performance Assessment Review Analysis of Knowledge of Holistic Development. That system is envisaged to be developed. Focus on CRT, as I have already discussed. When we are all talking about the outcome-based education, we are talking about criteria-based testing rather than non-sequence testing. Okay. So for everything, we need to see that how far this student has learned based on the criteria for that particular task and how much he has achieved. We are not comparing one student with the another student. That is really very, very important. Okay. So criteria-based testing. Then integration of IKS, essence of Indian Constitution, essence of IKS, environmental education, sustainability, employability skills. I think this also is all these soft skills and rootedness in Indian culture, that is the Indian Constitution, IKS, that all reflects that we are talking about our rootedness or our love for our country. Choice-based credit system, academic bank of credit, I think many things have already been covered. Integration of NSQF and then I think these are the pictorial representation. Can we have an example of choice-based credit system? In our case, we have fixed credit, 40 credits per semester, so 20 credits. We give directly they have fixed credit. What is the example of choice-based credit system? Here we can have certain courses in a higher semesters, we may have open electives like this. Or even you can suppose if you're a fast learner, you can opt many courses, other courses also, and you can have even maybe yours to if you are a fast learner, you can select certain courses and opt that courses, and that will be based on your requirement. So whatever fixed courses are there, that is compulsory, but you can opt for other courses based on your choices and with the different basket. Okay, like in open electives. Yes, credit will be additional credit will be awarded. I am coming to that. Additional credits will be awarded, and that could be accumulated as a academic bank of credit, which is just like a passbook. Okay. So it is just a pictorial representation of whatever concept I have discussed. That is academic bank of credit. So you can earn credit based on your learning pace, and that may be utilized somewhere if you require. Then inclusion of liberal art in higher education. It's not that if I am explaining the slide of liberal art, so it is I am focusing only on liberal art. The intention is it is multidisciplinary education. So you can add engineering economics, you can add management courses, you can add dance, performing dance also, performing arts also. You can add many other courses of different discipline. Okay, in your program structure, you can give the choice. The student can opt these courses if he is interested and can earn the credit. Because some mandatory courses are there which has to be done by the student. They can select the courses of their choice. The Indian knowledge system, I think this also has been discussed. I think then education in regional language, I think I have also focused on all these things. Multilingualism we are talking, even we should prepare the learning material for giving the students in at least 2-3 languages. My regional language and okay, we are not focusing on the rote learning. So critical and creative thinking is very important. We should not give the assignments of such type which is of copy paste. That copy paste type of assignments maybe you are giving in the first semester just to develop that skill of copy paste.
to learn that skill. Different skills are required. That is one of the skills. Because suppose he has to search some material, so he should know how to copy and how to paste. That is a different thing. He has to prepare one presentation. Okay. But ultimately, that critical and creative thinking, problem solving, innovativeness, that is really important. And that's why you should see how this can be developed. You can have certain one room also where you put all your softwares or tools and you give your sufficient time to the students, maybe 2 to 3 hours, 4 hours to the students, so that they develop these skills in the, you can develop these skills in the students. You should not give the assignments which are time waster. Okay, your time waster and a student's time waster, and just for the sake of giving assignments because it is there, it is the requirement of MSBT. Okay, so assignment should be well thought of. Okay, and the assignment should not be the same as which is given in the curriculum because it is written, it is a suggested assignments. Okay, then I think we have discussed a lot on this. There is a lot of focus on developing ethics, human and constitution values. To develop the love for India, love for our country, the value system, our value system. Why there is a need of separate course of social and life skills? Why there is a need of one course on value education? I think even right from the nursery class. Okay, so that has to be seen. You have to see that how these can be developed and how to integrate this value education or soft skills in the teaching learning of your technical courses. Then promoting digital education and use of technology, as I talked about the access to education, so that is important. Then full equity to ensure that all students are able to thrive. The 4 pillars I have already discussed. Okay, access, equity. So this is equity. Okay, so very important. All are equal. There should not be any discrimination between the world of a very rich person or a poor person or physically challenged person or weaker section, whatever it is. Okay, so that is really very important. Then integration of vocational education in the higher education, I think I have already discussed on this. Flexible student-centric education, very important. You can think of, even the management should see into this aspect. Then universal human values, so many things are written. Okay, so you should see how to integrate all these things in your students. Then social and life skills, how the social and life skills are developed. I think there is a session also. These are through MSBT. These social and life skills are being developed, will be developed through or by opting the different courses will be discussed in the afternoon. So this is all about the assessment reform which is mentioned in the curriculum NEP 2020 document. Many of the points has already been covered by Akule sir, so I will go little hurriedly. National education policy envisions making education more holistic and effective, and to lay emphasis on integration of very important the general education, then vocational education and experiential learning. Okay, because my father, suppose he was a doctor, so I was a practitioner in the Ayurveda medicine. So you can take the formal education and then that also will be recognized and the credits will be given after assessment. Okay? So experiential learning is also taken care of. Then to realize the intent, I think I have already explained the first implementation document of the NEP 2020 is the NCRF document. NCRF also promotes, because why we are talking about the credit transfer and so many other things, because we are talking about our global recognition and internationalization of education, so that we can go to the other country and where our qualifications and levels are recognized. And otherwise, you might have seen that many of the persons we have to do again we have to re-enter or register for the courses, and we have to repeat the
many courses which should not be there. NCRF is a single meta framework document notified for creditization and integrating learning in various dimensions of the academic, because there are three dimensions: academics, vocational education, and experiential learning. So that is very important. Uh, NCRF provides creditization of all learning and assignments, accumulation, storage, transfer, redemption of credits subject to assessment. Credits can only be awarded unless it is assessed. Okay, that is really very, very important. It's not that you go on teaching and teaching, but if you're not assessing that, then credits will not be awarded. Okay, that is very important thing. So, multiple M's for NEP and NCRF. I think this also I have discussed: multi-point entry, multi-point exit, multi-mode pedagogy. Okay, there can be different modes of teaching learning: multidisciplinary education, multilingual, multi-pronged flexibility, as I have discussed, flexibility in pace, your choice of courses, many things are there. So multi-pronged flexibility is there. Uh, I think this is also a single, because it is single meta framework. I think this we were talking about the academic education, then skill access and experiential learning. Additional credit, I think the question which first raised by him. So you can earn, because the 40 credits are there for 1 year, 20 credits per semester. Okay. So you can earn the 20 credits, means 20 is not fixed. It's not that 20 means 20. It can be 22 also. Okay, there is no such rigid guidelines. Okay, though we have maintained it 20, but there is no such rigid guidelines. So, addition, you can go, because of the flexibility aspect, you can earn more credits, and you can you can store it in your passbook of academic bank of credit. Okay, so that is there. Total learning hours of students can be creditized subject to assessment, as I have already discussed. Academic bank of credit also I have discussed. Uh, Credit transfer, I think that has also have been discussed. Choice of courses, I think all I have discussed. Many of the things has been covered by Akolesa, so I am going little hurriedly. This also I think he has been discussed, what is credit and what is credit point. So for all education, the notional learning hours for 1 year are 1200 learning. Again, I am repeating, very important, because 1 credit is equal to 30 notional hours. For 1 year, the 1200 hours will be there, and for 1 semester, 600 notional hours will be there. So 40 credits per year, okay, subject to assessment. So 20 credits for 1 semester. So, for 3-year diploma program, we have around 120 credits. Okay. I think this also has been discussed, because we are talking about multi-point entry and multi-point exit. Okay. So, after first year, if the student exit because of certain reason, maybe because of certain personal reasons, okay, or maybe he is not taking it, he doesn't like that diploma program, whatever may be the reason, then he has to, he will be given the certificate of vocation, okay, and then, but at the exit point, he has to complete, okay, one theory and practical course as would be designed by that particular respective institute. So that is done to the autonomy of the individual institute, not means that will not be is not being taken, means there is no uniformity in that. Then after second year, he will be at the NCRF level 4, and he will be given the engineering vocational engineering diploma, means after second year. Second year means after 4th semester. Okay. So, but here also at the exit point, he has to do one course theory practical of the credit, which would be decided by the respective institute, and that should be of that level. That is very important. Of that level,
In the first level, first year, it should be of vocational level, it should be of the engineering level. That is really very, very important. In the third year, definitely he will be earning the diploma. I think this is also we have discussed, has been discussed by the coalescer. So credit point and credit earns. Scope of notional learning hours. Okay, notional learning hours means it includes everything. It includes everything which has been in classroom, laboratory, field, industry, internship, sports, game. Everything means under the umbrella of this notional learning hours. Everything, all the job training, experiential learning, everything is covered under the umbrella of notional learning. But it does not include the self-study hours. Okay, so that study is different than the self-learning because the outcome of the self-study is learning. I think this is the slide which has been taken from the Ministry of Education site. So it is visualized that by 2040, means the policy, the different dimensions of the NEP 2020 that would be implemented. Now coming to the outcome, I think I covered the first part. Now coming to the outcome-based education. I am going a little hurriedly because of short of time. I think, but I think because initially I had to develop certain concepts, so I had explained many concepts, so I think you will be able to understand that. When we are talking about the outcome-based education, it means we need to have outcome-based curriculum. And when we are talking about outcome-based curriculum, and so implementation should be outcome-based, and then we are talking about the outcome-based assessment. This is the requirement of the NBA. Okay. So curriculum, if we say curriculum means curriculum is the backbone, or you can say it is the constitution of an educational institution, educational program. So it is very important, but it is not the only important thing. Its implementation is also very important. As I said earlier, you may have the best of the curriculum in the country, but if it's not implemented in the right spirit, unless you understand the full curriculum and the background, the philosophy behind that, you will not be able to implement the curriculum in the right way. Okay, so you may have the best of the curriculum, but if it's not implemented in the right spirit, then your efforts of you faculty, those who are involved in the curriculum design, all the efforts, money, everything will go waste. Okay, so your implementation is the most important because you are the most important persons in the whole system. Because ultimately, you are the future, you are carving the future of your students. That is really very, very important. So, and you cannot really isolate the curriculum with the pedagogy and assessment. It has to go in line. So I just take one example. Suppose I am doing certain thesis, okay? Then other project work, in major project work is there. You have identified, you have fixed certain outcomes. Then while presentation, you are focusing on your PowerPoint. You have made a very good presentation, but that was not aligned to the COs or the outcomes which you have fixed, not COs, sorry, on the outcomes which you have fixed. Okay. Then even when the assessor who is also doing the same thing, he is influenced or she is influenced by your presentation, he or she is not seeing the outcomes which was to be achieved, and you are giving the marks based on the presentation style and other things, the graphs and the slides which you have prepared. So there should be alignment of the curriculum, the outcomes. There should be, and with the pedagogy and then assessment. The very important point. Education is different from the how it is different from the conventional education. Here learners has to be active. It should not be the one-way communication as I am doing today. Because it's a one-day program, I had to do. I have no choice, but it should not be like this. Okay. So learners are active. Learners are assessed on an ongoing basis
focus on the formative assessment, progressive assessment, and then critical thinking, reasoning, reflection, and actions are encouraged. I have given you the example of the read film. Just see the projects there. How creative projects were made in period film. Okay, so very important thing. The curriculum is outcome based. Then focus on learning during curriculum implementation. The focus is not on what you have taught, what you have covered. You should not be relaxed that I have completed my course. I have taken all my sessions. Okay. Your worry should be whether all your students have learned or not. That is very important. As per the requirement of the outcomes. That is very important. Then focus on development of the practical integrated outcome. That is really very important. कि student क्या कर पाएगा? That is very important. Then learning is data center and teacher facilitates and constantly apply group for continue to consolidate the new approach. Your job is not, you are not a teacher now. The designation should also change, I think, in outcome-based education. Okay, we are not teachers. We are not teaching. We are the planner, we are the facilitator, we are the counselor, we are everything for the student. Okay, so you are the planner, you are the facilitator, you are the motivator for planning the activities of the student. You don't have to teach A to Z. Okay, so that is very important. Then teacher has to sees the curriculum as a guideline for attainment of outcome. You have to see what are the outcomes are there, what are the outcomes written, how you are achieving that outcome. That is your flexibility, as I said earlier also. You can devise your own strategy, your own pedagogy for achieving that outcome. If you are thinking that the activities which are given in the curriculum are not sufficient, you can think about the content-based syllabus, content-based outcome. You can design, you can teach something extra also, you can give extra examples also to see that outcomes are achieved. There is no limitation to that. Okay? Then learners take responsibility of their own learning and motivated by continuous guidance and feedback by teachers. Very important thing. If you just leave your students just like this, they will not be able to, they will not go in the right direction. If you just take in the laboratory class, you have just demonstrated how to do the experiments, and if you sit in your chamber, I think it will not serve the purpose. You have to do the continuous guidance, feedback to each and every student, which is really very, very important. Your intervention is very important to the students for the right learning. Otherwise, what will happen? They will develop the wrong skill, wrong concept. If he becomes a teacher, then after 30 years also he will teach the same thing. Same wrong concept which he has developed. Same wrong skill which he has developed. Okay, then he becomes a senior teacher and will be tagged as he's a very senior, so he must be teaching right thing. It's not like this. Okay. So focus on progressive and summative assessment. The purpose of the formative and progressive assessment is feedback for right skill development for improvement. Outcome-based curriculum design and development in the context of eligibility, I think Police has already explained. We have done this exercise because the output of the curriculum planning and design is the curriculum document, which is in front of you up to second semester. So we had done the need assessment, okay, from the teachers, from the industry persons, from the alumni. We have seen what are the prerequisite knowledge skills, that is how much duration of the program should be there, entry level qualification, what are the outcomes to be attained. I think this is given by the PO or the NBA POs. Ultimately, we have to assess the PO and COs. Then job position, we as a teacher should be able to know what are the outcomes to be attained by my students of mechanical engineering, civil engineering pass outs, electrical engineering, costume design or garment technology.
how IT is different than the computer science, and what are the specific requirements of the different discipline. Okay, so what are the outcomes I am expecting from the pass out of this? That is the outcomes. And we have to map in our mind that whether these outcomes which I have identified are being developed or not in my students. That is very, very important. Okay, and every time we should, it's an iterative process. Every time we should see during implementation whether how many outcomes we have developed. Very important thing. Okay. Definitely, though POs are given, 7 POs are given. But do you think the 7 POs are sufficient? The common general 7 POs are given by NBA and it has to be applied in all the programs. It is not sufficient. We need to interpret, we have to go beyond, we have to go deep into the POs and apply in the context of our program, which is very important. Okay, so that is so you need to know. So it means I want to say you should know if I consider my student as a product. Okay, then what should be the specification of my students in terms of knowledge, skills, and attitude? Okay, so you should be able to jot down what should be the specification of my students. Specification means I'm talking about the technical skills, soft skills, and other things. What should be the tagging in my students, which is very important. In what positions they will be working, I think that we should know and we are preparing for that. And then what are the job functions that they will be doing, whether they are wage employed or they are self-employed. Then employment potential, we are preparing our student not only for wage employed, we are preparing our student also for the self-employment also. And our Prime Minister Modi ji has also initiated this, has taken this work at a very high level, and he is promoting the enterprise, startup and all those things. So many schemes are there for funding and financial support also. Life cycle of the program. Okay, we should know what, because it's not that we start more and more courses, programs. Okay, we need to understand as MSBT or any other state, what should be the life cycle of that program. It should not happen that it just die its own death. Okay, so means it's after one cycle or two cycle, because there is saturation in the world of work, you have to close down the program. It's a very important thing. Okay, because you are doing so much of investment, you are hiring the human resources, physical resources, buying the equipments. So all these things has to be taken when we are planning or starting a new program. That is really very, very important. Integration of NEP 2020 document, if I am saying NEP 2020, it includes NCF and other things. I think this also I have discussed need assessment. This also I have discussed. I think this is also discussed. Of course, basket, as he was saying, that has also been discussed. I think as you know, there are 3 domains: cognitive, psychomotor, and affective domain. Okay. There is no compartmentalization between the 3 domains as cognitive, psychomotor, and affective. This is only for the understanding of the teachers. Okay. If I say there is a more focus of practical skills in the means with the psychomotor domain, it means can you work only with the psychomotor domain? No. Some prerequisite knowledge is essential for performing in the psychomotor domain, for performing something. It means cognitive part is also integrated with the psychomotor domain. Okay. You are a very intelligent person. You know how to do all the experiments, how to install a new equipment, high-tech equipment. Okay. You have the knowledge of installing also. Okay, prerequisite knowledge means prerequisite knowledge I am talking about, the theoretical knowledge. But you are not doing it because you are thinking because I have to join, I have to apply in IIT or I have to apply in NIT. So I am busy in preparing my own profile and busy in that I am not interested in taking the class. So here comes the affective domain. Okay.
So integration of the three things are very, very important if you have to perform. You cannot really isolate the three things. Similarly, I say there are overlaps in these baskets also. Okay, there are overlaps, there may be overlaps in the basket also. Discipline specific courses must means core courses which are really mandatory for the, like for mechanical engineering, you have to do this, you have to learn this course. You need to have this course in the program structure. Then discipline specific electives like the diversified courses. And that diversified courses may change as per the requirement of the need of the world of work, maybe after every 2-3 years. Then generic elective means they are generic electives. You can say they can be certain common courses like management, financial management, marketing management, or like these type of courses which you think have as an importance, very important courses, and which would be required for across the many programs. So we call it as a general elective. Ability enhancement course means here we are trying to develop the ability of the student. It is more of the cognitive rather than the psychomotor. Okay. Then skill enhancement course. The skill means we are talking about the practical skills development. So practical skills enhancement course. Then value education course. Again means the whatever affected domain, professional ethics and all these things, whatever things, IKS, Indian Constitution, everything, social skills, life skills, all these terms will come under the umbrella of the value education. But I have certain reservations, and the other is IMP, internship, apprenticeship, project, community, whatever you are doing, that will come under the basket of IMP. But I have certain reservations because, as I said, there may be certain overlaps. Okay, as in the cognitive psychomotor affective domain, as in the CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, as I will be coming to that and when I will show you the format of the course curriculum development. Because if I say discipline specific course, then which is overlapping with this, skill enhancement will overlap with this, ability enhancement will overlap with this. Okay, so there may be overlaps in this category, in this basket of courses. Then vision and mission of the program, I think this we know. Program outcomes, then course outcomes, because ultimately if our curriculum has to be NBA aligned also. So ultimately what is to be assessed? POs and COs only. Okay. But we cannot have, normally we are writing 5 to 6 POs, COs, 7 POs are fixed for NBA for diploma program. Okay. So COs normally, general rule it should be 4 to 6. Okay. So suppose we are writing 5 POs, 5 COs. So we cannot, it means for each semester, we have around 5 to 6 courses, and for each courses, there are 5 to 6 COs. So it means for a 6th semester, we have around 150 to 160. So it means 6 to 7 courses, so around 30 COs. So in a diploma program, we have around 150 to 170 COs. So with 160, 170 COs, all these 12 COs will be achieved. It means we will be achieving the POs. Okay.
But definitely we cannot directly teach the COs, 5 COs in a semester. We start when we take 1 COs and we start teaching the COs. Okay. So for the sake of convenience only, what we have done, we have fragmented or divided the COs into the further smaller units, which we call is the theory learning outcome, laboratory learning outcome, or term work. Okay. And if you have visited your NSPT website, you might have seen that in the I will be also showing you the detailing of one course. So COs, because COs are at the higher level, okay. So they are being fragmented into theory component, practical component, and the third is self-learning component. As we were talking about, we also call it as a term work, where all the micro projects, assignments, and all these things are. So I think it is clear. So when we design the curriculum, we talk from up to down, but when we implement the curriculum, we start from the bottom to the top. Okay, because we are taking means learning of each and every very small sessions. Ultimately, they combine to form the COs, and then all the COs of different courses of different semester they combine to form the POs. Okay, so I think it is clear to everyone. This is the pictorial representation which I just told you. There would be overlaps only for the sake of convenience only. We write CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, and as I said, the COs, POs cannot be directly achieved, so we are talking about SOs, assessment of the SOs. Assessment of CO, learning of COs. So the SOs has to be achieved through different activities, as I said, implementation, which is called the implementation. Implementation through laboratory, workshop, field work, industrial training, co-curricular activity, classroom, extracurricular, I think it should not be there. So that is there. Okay. Similarly, like here, the different SOs, means POs are there semester-wise, and COs, whatever I said, I think I have given you the pictorial representation of the same. So I think this also I have explained assessment of learning, assessment of learning, assessment as learning. So there should be focus on assessment for learning, assessment as learning, and assessment before learning rather than assessment of learning. This also I have explained OBE and CRT. There should be focus on CRT rather than NRT. Some of the NEP courses suggested, it is only suggested, NEP aligned courses, IK as a sports, yoga, meditation, NCC, NSS, OER, professional ethics, Indian constitution, digital marketing, employability skills, universal human values, financial literacy, holistic personality development, basic practices of liberal art, renewable energy, engineering economics, renewable energy sources, conservation and audit. They can, many of them can go into the NEP general elective also and NEP aligned courses also. In open electives, these which may be across the discipline, because you know Python programming is required by every discipline. AI, ML, energy, environment, sustainability, basics of AI, ML, IoT, uh, robotics or automation, 3D printing, drone design and application, drone technology. So there may be more number of courses you can identify as per the requirement of MSPG. So thanks to each, thanks to my seniors, my ex-professors, and my colleagues uh, for updating me and for sharing their knowledge. Thanks to all of you for patience. This is one. I will just continue this means part two. Part two means the curriculum, course curriculum detailing of one course. I will take 10-15 minutes more. Thank you so much.
We'll just complete in 5 minutes. Course curriculum of one course. I think rationale. What is rationale? Course code, and I think which is of no interest to you. Course code. Rationale. Rationale means why this course in a program structure. That is really very important. Okay. Why this course in the program structure? What is the practical significance of this particular course in the program structure? Very important. It should be layman's language so that the student appreciate and generate interest in learning this course. Then industry employer expected outcome. Earlier we used to write competency. Competency because now we are shifting towards outcome-based education. So under the outcomes, everything comes. So don't get confused with many words, objectives, our competency, and so many other things. So outcomes means we are talking about outcomes because NBA also talks about outcome. It does not talk about the competency. So industry employer expected outcome, which is written. Now coming to the course outcomes means it is the reflection piece. It is the reflection or gist or abstract of that particular course. Okay. So it's writing the COs is very important task, and it's not a one man's wisdom. Okay, because when we write the COs, it has to be written with it should be measurable, it should be achievable, it should start with the verb, and so many action verbs and so many things are there. Smart, it should be smart COs, but it should be based on the requirement of the industries. That is very important. It is written as per the requirement of the industry. So it should demonstrate what the student will be able to do. The student क्या कर पाएगा यहाँ पास आउट होगी इस कोर्स को पढ़ने के बाद. That is the COs. If you are not writing the correct COs, it means then your teaching learning, your assessment, all will be aligned to that. As I think the first point which I wrote, curriculum, assessment, curriculum, pedagogy, and assessment should be aligned. Okay. So if your curriculum is, if you are framing the wrong COs, it looks that it is right because you have added the verbs and everything, but they are not the representative sample or the abstract of that particular course. If it is not written correctly, it means pedagogy and assessment means your teaching learning will go in the wrong direction, and assessment will go also in the right direction. So it should be a group work. Identify the COs. Should be a group work. It should be the valid COs for that particular course. So next, I think we have already explained this PS. Next, please. Now, I think this also has been explained by the Kulesar. Now, as I mentioned, we cannot just teach directly the COs. It has to be fragmented into the TLOs, LLOs, and term work. So TLOs means first, because COs, when it is fragmented into
into the smaller unit, then it becomes the TLO, theory learning outcomes, because COs are always written at the higher level. We don't write these small verbs or lower level verb when we write the COs. So here we can definitely write, when we write TLOs, we can definitely write list, define, so many other means lower level verb, because we are taking the session. Okay, we are making students aware of the different concepts. Okay, so it is a TLO. We are breaking the COs to the TLOs, and from TLOs we are deriving the content or the unit, the topics, subtopics. Is it clear? Okay, so and what pedagogy, suggested pedagogy is to be used, that is written. It's not that we know, because when we are talking about the outcome based curriculum implementation, so it's not that we are talking about unit 1, unit 2, unit 3 हमको पढ़ाना है, because ultimately the focus is on the development of the learning outcomes. So learning outcomes at the different levels, means when it is at the program level it is for the PO, when it is at the course level, it is for the COs. When it is at the session level, it is for the TLO, theory level outcomes, or practical level outcomes. I think it is clear. Next, sir. So it is up to the 5 minutes. It means for 5 COs, for the sake of convenience only, we are framing the 5 units. Okay. Please, next one. So up to the 5 minutes, I think it is okay. Laboratory learning outcomes. So similarly, the COs are break down into the LLOs, laboratory learning outcomes. And from the laboratory learning outcomes, we derive that what skill, what practical title can be framed out of that LLOs. Okay, so this is how we get the list of experiments. Okay, and then what would be the mapping with the COs, and then even the theory also there can be overlap, means in unit 1 there can be two COs, CO1 and CO3. As I showed you one diagram, overlapping diagram. Here also, even in the laboratory experiments also, there can be overlap. Next, sir. Next, yes. Just a moment. Just a minute. 5 के बाद ना इसका. End of the table, end of the experiments. Just hold on. End of the table. Just. So mark practicals LLOs are mandatory. So why it is mandatory? Because it is reflecting that if you do these experiments, then only your COs will be achieved. That's why it is written. Next, suggested micro project assignment activities, the third dimension. Okay, so that is for the micro projects and all this. It is only suggested micro projects and activities. Then self-learning activities are also written. Then laboratory equipment, instrument tools, so that is written. Then suggested weightage to learning efforts and assessment purpose. So the unit wise, this is written. Unit wise means it is based on the COs. You can write the COs first, and then from the COs only the units were derived. Okay. Is a representative sample of the question paper. It's a representative paper for the summative assessment theory paper. Okay. Question paper. It's a representative paper for the summative assessment theory paper. Okay. So that is there. And it's not that the learning hours are proportional to the marks which are mentioned here. It's not a number table. It is a well planned. There should be lot of discussion on this preparing this specification table, because it lot of discussion on this preparing this specification table, because it is a blueprint of the question paper,
which can be used by the design of the question paper, means those who are preparing the question paper. That means it is a guideline for the students who are preparing for the examination and all these things. So that is really very, very important. There is no correlation, it's not directly proportion that if you are spending more hours in the unit 1, so marks should be more. Okay, you have to spend more time for in the conceptual initial units. Okay. Then I think assessment methodology we have already discussed on this. It is reflected, it is clear from the even from the program structure, the scheme of learning and assessment. Uh, uh, Mapping. I think I was discussing about the COPO mapping. As I said, when you combine all the COs of different semester, different courses of different semester, ultimately it leads to the development of the POs. So how the CO1 is aligned to different POs, you have to map it. 1 is low mapping, 2 is medium, and 3 means higher mapping. So accordingly, you have to map it. Suggested learning book, sir. I think it is okay. This is all about girls. So thank you so much for patient listening. Yes. And I hope you as a teachers will definitely implement or will try your best to implement the things very effectively so that the MSBT curriculum is implemented very effectively. We should all best wishes. Thank you so much. थँक यू सो मच मॅम. रेडी घेण्यापूर्वी 5-10 मिनिटाचा चहाचा ब्रेक घेऊ. चहा घेऊन परत 10 मिनिटात इथे येऊन बसायचं. पुढचं सेशन वेळेत सुरू होईल. शार्प 3:55 आपलं नेक्स्ट सेशन सुरू होणार.
कृष्णा बोलला काय द्यायलाच लागतं काय म्हणजे तुम्ही त्याला हे द्या ना किटी करा की कागद द्या ना द्या ना तर ओव्हरऑल नका म्हणून एकावर विचारा ना ओव्हरऑल तो आपल्याला त्याला SAPR म्हणायचं. SAPR क्या करेंगे कंटेंट 3 दिन प्रेशर मेरा टाइम लगा उसका टाइम ही नहीं था ना बोला हर सेशन को मैं हाँ वो मेरा आखिर तो अभी वो जो ये एक सारा फ्रेम है ना उसमें जो वही तो वो बहुत सारा खाना खाने के बाद मैडम से बात हो रहा है पानी चाहिए था मुझे मंगाओ नहीं नहीं ये आ जाएगा काय करूया आतले लोक आहे ना वरती उभे राहते आपले खाली उभे राहते स्लोप आहे चाय मैडम बोले मैडम चाय नहीं चाहिए थैंक यू गुरु गोविंद सिंह बहुत बार जा चुके हैं आई हैव बीन टू not for this for some training program I don't remember so I know her मॅडम तो लगभग 25 साल हो गए I also joined in 1990 34 years उससे पहले
Sir, उसको वहीं से start किया. 1 year I was in college. उसके पहले PG कॉलेज में उसके पहले PG कहाँ पर? हाँ, अभिलाष ठाकुर. वो है ना? मैंने resign कर दिया. है ना? बहुत पहले. गुप्ता साहब है? शशिकांत गुप्ता. ये ये कैसे? रिटायर होने वाले हैं सर. शशिकांत गुप्ता. आपको 65 है ये? आपको 65 है? हाँ. अभिलाष ठाकुर आइसक्रीम है हमारे साथ के हाँ. पुनः इधर थोड़ा क्या? जस्ट स्पीकर है ना जस्ट स्पीकर है ना अजून क्या Just act normal. You're welcome, sir. ओके फ्रेंड्स चालू करें Yes sir. पीपीटी चालू कर दीजिए यस
अभी आप कुछ मत करो, जो करना है मैं कर रहा हूँ। हेलो, है ना, आप छोड़ दो। यस फ्रेंड्स, टेक सीट्स। और अभी बहुत अच्छा सेशन हुआ है। देयर वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन फ्रॉम अंजू गोले मैडम एंड हियर वी हैड फ्रॉम अकोले सर, एंड नाउ वी आर कमिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ओके, सो अप टिल नाउ वी हैड gathered the different aspects of NEP 2020। बल्कि NEP 2020 का फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा जी? सर आगे से तो मैं पीछे से बोल रहा था। हाँ जी मैडम, NEP 2020 का फुल फॉर्म बताइए। पीछे वाले वो चले गए, देख नहीं रहे। मैडम आपसे पूछ रहा हूँ, NEP 2020 का फुल फॉर्म? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बस कंफ्यूजन ये है, चलो हड़बड़ी में न्यू बोल देते हैं नेशनल के बजाय। ओके चलिए, वेरी नाइस। ओके, है ना, न्यू स्पेशल बोल देते हैं। सो इट्स नॉट न्यू, इट्स नेशनल। बस इतने मैं आपको बोलना चाह रहा था। तो हम कोर्स प्लान के बारे में बात करेंगे। Many of you have already earlier prepared course plan, but as Anju madam has told that there are many different aspects in NEP 2020. So you cannot take the same course, जैसा अपोले सर ने बताया था कि the name may be same, okay, जो पहले था in the last scheme. So we cannot take the previous course plan. You will have to change the course plan accordingly. तो हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। Okay. Okay. So just take okay. So सबसे पहले टीचिंग लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। So who should learn? Who should learn? बेसिक क्वेश्चन बताइए पीछे से। आगे? Okay. So students to learn करेंगे, okay, but most important thing is क्योंकि अभी now things have changed, so we also have to learn. So who dares to teach must never cease to learn. So friends, this is a very important aspect that all of you, we have to now burn the candle of learning, okay, and it should be continuous. दीप प्रज्वलित आपका रहना चाहिए लर्निंग का, ये मैं बहुत बताने वाला था। और फिर नेक्स्ट बात आती है, keep educating yourself, okay, keep educating yourself. We talk of, जैसे मैडम ने बताया, lifelong learning. So it's very important. As teachers we should do it, and many have told you कि आपको NEP 2020 document you have to refer once again. Okay, so coming to the course plan, friends, कुछ आपके लिए टीजर हैं। You had good lunch, मैंने भी लिया, नींद भी आ रही है। Okay, so fill in the blanks आपको करना है। ये क्या लिखा हुआ है? Please fill in the blank. और मुझे मालूम है पीछे वाले जितने लोग हैं, you have additional degree, LLB, है ना, इंजीनियरिंग के साथ, लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंचेस, ठीक है। तो आंसर आपके पास से ही आने वाला है। आंसर आपके पास से ही आने वाला है। What is this? जी सर, beverage, ये पूरा BVG, no. There are 3 words. Anyway सर, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। ये 3 अलग-अलग वर्ड्स हैं, starting with B, V and G. हाँ सही बोल रहे हो। यस, भारत तो सही बोल दिया। ओके, तो 20 और भारत। ओके, आगे बताइए। हिंट दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी बार बोलते हैं विकास से भी विकास नहीं है, विषय मिलता जुलता। अच्छा चलो लास्ट वाला देखो। हाँ नहीं, स्टार्ट फॉर जी बताओ क्या है। नहीं, चलो हिंट दे रहा हूं, जी इज गुरु। अरे वाह, ओके, आप सबने बता दिया, भारत विश्व गुरु। ओके, सो नाउ यस, दैट इज द राइट आंसर, भारत विश्व गुरु। फ्रेंड्स, मैं आपको आई जस्ट वांट टू टेल यू that in very near future
maybe just few years or a decade, Bharat is really going to become a Vishnu Guru. And have you seen, you have already seen that India has got a very good rapport amongst the world. That is number one. Number two, what is more important is that our economy is going at economy is going up at a very high rate. Okay, and very soon we would be the third biggest economy of the world. And when it comes to electronics, IT, we are at par with developed nations. Okay, थोड़ा बहुत चलेगा, but we are at par with developed nations. So we have to stress more on manufacturing and a little bit on manufacturing related service sectors. We would become the Vishnu Guru. But who will work for this? कौन काम करेगा भारत को विश्व गुरु कौन बनाएगा बताइए? जी सर, स्किल लेबर. यस सर ने पाटिल साहब ने बहुत अच्छा बोला. सर भूल गए एकदम से, में आपको धन्यवाद देना चाहिए. सर ने प्रिंसिपल सर को धन्यवाद दिया, ताली बजा दीजिए. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और साथ ही साथ में पूरा जो हमारा एमएसबीटी के जो साहब बैठे हैं, उनके साथ बैठे हैं और हमारे सारे प्रिंसिपल लोग सीनियर फैकल्टी बैठे हैं. हु हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू. तो पहले मुझे बोलना चाहिए था, माफी चाहता हूं सर. इसके बाद मैं अब शुरू कर रहा हूं. ओके, तो सर ने ये कहा, अरे यार चलो कैसे भी हो, आपके मुंह में हंसी तो आई यार. सुबह से पहली बार मैं अभी खाना भी खा लिया, तो अभी चाय भी पी लो, थैंक्स तो बोलना बनता ही नहीं उनका. ओके, सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हु विल मेक इट. सो द यूथ, सर ने जो बोला है, इट इज द यूथ. ओके, यूथ. और यू हु इज ट्रेनिंग द यूथ? सो दोस्तों, हम इंजीनियर्स हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक इंजीनियर गलती करता है तो बिल्डिंग गिर सकती है. एक डॉक्टर अगर कोई गलती करता है तो पेशेंट बीमार सकता है. मैडम तो यूं कर दिया मैडम ने कि वो ऊपर ही जा सकता है. ठीक है, लेकिन अगर एक शिक्षक गलती करता है तो राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है. सो दोस्तों, जैसा पटेल सर ने बोला कि यूथ तो हमारा काम करेगा, बट यू आर इंस्ट्रूमेंटल. सो रिमेंबर, if Bharat becomes the Vishnu Guru, you would be the persons, the greatest motivator who is going to make that happen. इस नशे के साथ अगर आप टीचिंग लर्निंग करेंगे तो that would be wonderful, and this is the essence of NEP 2020. Okay, चलिए साहब, अब दूसरी बात आती है, who is an, शॉर्ट समय कम है तो मैं आप कोई ट्राई करेगा क्या? इंजीनियर. Who is an engineer? We teach engineering, but tell me who is an engineer? Anybody? वाह यार सर, मान गए आपको. Very good, very good. Okay, okay. So, who solves the problem of the society? क्या यार ये? Solve the problem of the society. ओके, ठीक है ना? आंसर लिखा हुआ है जो सर ने बोला. बहुत बढ़िया, ताली तो बजाओ यार इनके लिए यार. तो solve the problem of the society. अब you tell me, the students are there for 3 years and 6 semesters. How many times you have told them to go to the society? Perhaps not. Very rarely in the last semester. Supposing if they are doing some project work where they have to go to some society, then only. But as an engineer, they should be connected with the society, and moreover, they should know what are the problems of the society. Okay, so remember very well. अभी जो हम आपको बताने वाले हैं, apart from this course plan, जो I am integrating 2 things, course plan और फिर उसके बाद में जो आपका social वाला subject है, वो दोनों में करना चाह रहा हूँ. So social के लिए हमको एक ध्यान देना है. Okay, so the essence of NEP 2020 में आपको बताऊं, बहुत अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन बेसिक एसेंस ऑफ NEP 2020 is that in our classroom we should generate curiosity. ठीक है ना? Curiosity. So हमारे लेक्चर्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि yes this is the definition, this is this. What we do, हम कोर्स कवर करते हैं, हम सब पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल कराते हैं, न्यूमेरिकल के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, फिर हम उनको क्या करवाते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर बता देते हैं. And we also tell them what are the important questions which may come in the examination. करते हैं या नहीं करते हैं? तो
इसको कई बार कहा जाता है स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग समझते हैं? स्पून फीडिंग मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। दिस इज नॉट स्पून फीडिंग, दिस इज बॉटल फीडिंग। सो एनईपी 2020 टेल्स कि बच्चों को पढ़ाओ नहीं, उनको जिज्ञासु बनाओ। जिज्ञासु, आप उनको आधा ही पढ़ाओ। आई नो वेरी गुड टीचर्स, मैं बार बार बोलता हूँ टीचिंग इज एक्टिंग ऑन द स्टेज, आपको भी आना चाहिए। और मेरे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, वो आते हैं और आके बोलते हैं यस स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच दिस टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। और ये तो ट्रांसपेरेंसी तो पिछले चैप्टर के आ गई यार। सॉरी, मैं नहीं पढ़ा सकता, वो मेरे पास ट्रांसपेरेंसी। तुम पढ़ लेना और कल मुझे बताना। तुम पढ़ देना और कल मुझे बताना। सीनियर टीचर्स के बारे में बात करना, नॉट जूनियर टीचर। एंड दीज टीचर्स देन टेल मी कि भाई मैं जितना 1 घंटे में पढ़ाता, अगले दिन स्टूडेंट्स ने लर्न करके उससे 4 टाइम्स ज्यादा मेरे को बताया। समझ रहे हैं आप? मैडम ने क्या बोला? टीचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? और देखिए, अगर वो टीचर टीच करता, वो भूल जबरदस्ती एक्टिंग कर रहा था भूलने की, भूला नहीं था वो, ओके, बिल्कुल नहीं भूला था, ही जस्ट एक्टेड एनेक्टेड, और स्टूडेंट में एक क्यूरियोसिटी जनरेट करी। अब क्यूरियोसिटी जब होती है तो नेचुरली क्यूरियोसिटी से बाद क्रिएटिविटी की आती है। मैडम ने बहुत अच्छा बताया, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो राइट ब्रेन जो होता है वो आपको क्रिएटिविटी डेवलप करता है। यही पर many times people say, सारे लोग कि भाई the credits have been reduced, the subjects have been reduced, total load has been reduced in NP 2020. So let me tell you, it is a precondition for the creativity that person should work slow. अगर मान लीजिए it is working like a robot, 8 o'clock अगर 8 o'clock या 4 o'clock उठता है मॉर्निंग में और खड़ा काम कर रहा है, तो फिर उसके पास बैठ के सोचने के लिए there is no time and he will not be creative. So creativity only happens when person thinks, और थिंक्स के लिए आपको आराम से बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, शांति से काम करना पड़ेगा। तो इसलिए भी मान के चलिए कि शायद थोड़ा लोड आपका कम कर रहे हैं स्टूडेंट में, तो he would be more creative. And once creativity is there for innovation, I am not talking of inventions. NEP 2020 कहती है कि the innovations should be in the classrooms, है ना? क्लासरूम्स एंड लैब्स में सेमेस्टर। डोंट थिंक कि पॉलिटेक्निक कर लिया फिर देन यू विल डू ग्रेजुएशन, देन यू विल डू एमटेक और पीएचडी में जाके करेगा, लेकिन दैट विल बी इन्वेंशंस। सो डिफरेंशिएट बिटवीन एंड वेरी गुड। देखिए आप पार्टिसिपेट करने लगे, ओके, वेरी नाइस। सो इनोवेशंस आर डूइंग न्यू थिंग्स, ओके। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनोवेशन आना शुरू होंगे। एंड एनईपी 2020 says that when innovations are there, so good innovations, so they will, government will facilitate for IPR. Already हो रहा है, बहुत से लोगों को मिल चुका है। डोंट से कि कब होगा क्या होगा, है ना? They are being funded, they are being guided, and once you get an IPR or students get an IPR, he can use it anyway. He can sell it for some benefit, for some money also. But if he does not want to sell anything, so perhaps he could go startup. He can go for a startup himself. Okay. अब ये सब कब शुरू होगा? कब शुरू होगा ये? नहीं होगा। कब शुरू होगा भाई? अरे मैडम जोर से बोलो ना, धीरे पढ़ो, वाले कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मेरे को सुनाई दे रहा। बोलिए, बहुत अच्छा आंसर है आपका, दिलाओ, बोलो बेटा। यार ये मत समझो कि पाटिल साहब ने खाना खिला दिया, पाटिल साहब ने चाय पिला दी, अब सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं पाटिल साहब देंगे। ये तो अभी तो नहीं दे रहे सर, ओके। तो सर ऐसा नहीं है, ओके, प्लीज पार्टिसिपेट। हाँ जी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ जी बोलिए सर, आप कर दिया आपने? मैडम प्लीज थोड़ा बता दीजिए, जोर से बोलिए। वंडरफुल। नहीं मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, कौन से सेमेस्टर में? मेरा सिंपल सा आंसर था, इंग्लिश सेमेस्टर जी। ये देखिए आंसर आ गया, सर सामने बैठे हैं, बहुत अटेंटिव हैं। ये बोल रहे हैं डोंट वेट फॉर द लास्ट सेमेस्टर, यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग।
ओके, फर्स्ट सेमेस्टर से ट्रेन करना है। पहले आलसी हो गया तो बाद में क्या करेगा, समझ रहे? तो ओरिएंटेशन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एनीथिंग वुड कम आउट जस्ट इमीडिएटली इन द फर्स्ट सेमेस्टर, बट द ओरिएंटेशन हैज टू बी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर। जैसे ही बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में आता है उसको बोलो कि तुमको इनोवेशन करना है, रोज इनोवेशन करना है, कुछ तो करेंगे। ओके, तो द नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट। ओके, स्किल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब स्किल डेवलप बहुत सारी बातें हुई है, ये फोकस और मल्टी पॉइंट एग्जिट और मल्टी पॉइंट एंट्री और उसके बाद एमटी भी लगा हुआ है। तो एमटी कोई बता सकता है क्या है ये? एनीवे, तो जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मल्टी पॉइंट एंट्री बहुत सारी बातें हुई मल्टी पॉइंट एग्जिट में, बट जैसा कहा गया था कि पहले सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके लिए ब्रिज करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो वो सब क्यों करना पड़ रहा है? वो सब इसलिए करना पड़ रहा है कि यू हैव टू डेवलप दिस काइंड ऑफ स्किल। ओके, ये जो है ये स्किल होना चाहिए। Once he exits on the first semester, he should get a job. Example दे रहा हूँ, डिप्लोमा इन स्क्रीन प्रिंटिंग, so we revised the whole curriculum और हमने क्या किया, in the very first semester हमने उनको पढ़ाया स्क्रीन प्रिंटिंग और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीपीसी, और वो भी स्किल ग्रेड पे, थ्योरेटिकल नहीं। ओके, so if he exits in the first semester, at least he can work in these two areas and get some job. Got it? So ये स्किलिंग को ऐसा नहीं है कि ये स्किल वाला कोर्स है। Every course you teach, maybe physics, maybe chemistry, maybe mathematics, maybe English, उसको कुछ ना कुछ उसकी स्किल डेवलप होना चाहिए। ये मेरा आर्टिकल्स स्किल्स में होता है, तो वो भी बात हो सकती है। अगर फिजिक्स की लैब में वो मान लीजिए कि लैब में मान लीजिए कि वो स्केल रिपेयर कर ले या मतलब सप्लाई इशू कर दे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है, समझ लेते हैं। सो स्किल डेवलप होना जरूरी है हर सब्जेक्ट में, व्हाटएवर सब्जेक्ट यू आर टीचिंग, है ना। स्किल डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी है? हाँ जी, हाँ, टीचर्स की। आपकी नहीं है ना, आपके तो नहीं है ना। एक भी आंसर नहीं आया कि मेरी है। भैया मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी है, सब लोग इधर मेरे टीचर की है। दिस विल नॉट डू। ये तो सब जगह लिखा है डॉक्यूमेंट में। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये आपको, यू हैव टू थिंक कि आपके कोर्स में आप स्किल डेवलपमेंट कैसे करेंगे। यू शुड बी एबल टू डू समथिंग इन प्रैक्टिकल। ओके, अरे यार, हाँ, ओके। अब ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, इसका आंसर दो और सही आंसर आना चाहिए। Who works more, teacher or student? Student। टीचर। उधर से बताइए, ज्यादा है यार। अच्छा देखो मैं बताता हूँ, you work for at least वो सर क्या बोलते हैं 15 weeks, अभी तो 16 करते थे, अभी सर ने एक कम कर दिया आपके लिए, ये भी कंसीडरेट है, आपका भी लोड कम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। ओके, सो 15 वीक्स आप काम पढ़ाई करते हैं, मतलब कराते हैं, यस और नो? स्टूडेंट कितने वीक पढ़ता है? दो आंसर आ गया, दो। इट इज अ फैक्ट यार, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अब मुझे ये बताइए कि आप इतने जो एफर्ट कर रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू डेवलप दिस स्किल? जब काम नहीं करेगा तो whatever you may teach, he is not going to learn. तो देखिए NEP 2020 addresses all. सर जो अभी भी जो बात कर रहे थे सेल्फ लर्निंग, for every hour of what you teach, the student also has to do something. तो NEP 2020 ये देख रही है कि हमारे टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, so even the students should equally work and then something should come. Innovation से जुड़ जाएगा, बोलने से एक स्लाइड पे लिख दिया तो, है ना। बहुत लंबा चौड़ा इस पे वर्क हुआ है। सो वो फिर ऐसे सेल्फ लर्निंग के बारे में हमने बात करी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो सेल्फ लर्निंग की जो चीजें हैं उसको आप करें। ओके, देन वी टॉक ऑफ IKS इन इंडिविजुअल कोर्सेज। सो IKS इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिलेट कर रहा हूं, जैसे भी अभी सर ने किसी ने बोला था कि अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, सो इंडिया हैज बीन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन नॉलेज। मे बी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, मेटलर्जी के बारे में बात करें, एस्ट्रोनॉमी के बारे में करें, मेडिसिन के बारे में बात करें, किसी भी एरिया में ले लीजिए, हमने वी वर वेरी वेरी। पर आप सोचिए, आज से हजारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी होती थी, प्लास्टिक सर्जरी और मेडिसिन वाली,
इंजीनियरिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सोचिए। सो वी हैड, लेकिन क्या हुआ, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, व्हाटएवर मे बी दी पास्ट इंसिडेंट्स, वो हम वी लॉस्ट ऑल दैट। तो हमको धीरे धीरे उसको रिकवर करना है। क्यों रिकवर करना है? क्यों रिकवर करना है? पीछे वाले बताएंगे, लॉयर सारे। अरे आगे वाले तो सही बोल देते हैं सर, पीछे से आंसर तो आ जाए, यहाँ से आगे आंसर। वेरी गुड। बोल रहे विष्णु कब बनेगा भैया? तभी तो बनेगा जब हम आगे रहेंगे। वेरी नाइस। सो नाउ फ्रेंड्स, मैडम हैज टोल्ड यू कि आपको करिकुलम के अंदर, कोर्स प्लान के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। डोंट ओनली थिंक कि ऑल द इक्वेशंस, ऑल द एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डेरिवेशंस, वो सब मैंने कर दिया, वो काम हो गया। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइको, कई लोग साइकोलॉजी मत बोलना, साइकोमोटर डोमेन्स। ओके, साइकोमोटर डोमेन्स। सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि इन लेबोरेटरी अगर मान लीजिए डाउट आप काम कर रहे हैं तो वेयर इट हैज टू बी डिस्कार्डेड। ओके, एनवायरनमेंट, सो ये सारी चीजें अफेक्टेड डोमेन में आ गई अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी। सो जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ ऑल द डोमेन्स। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम करिकुलम प्लान बना रहे हैं। मैं जस्ट इसके पहले फॉर्मेट बताऊंगा। ओके, आई होप कि सबकी कॉपी खुली हुई है और आप नोट कर रहे हैं, ठीक है ना? नहीं जिनकी खुली है फुल है, क्योंकि इसके बाद में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर इसी में मिलेंगे आपको। ओके, सो इन योर कोर्स प्लान, अभी कोर्स प्लान की मैं लगाऊंगा, यू हैव टू इंक्लूड ऑल दिस इन योर सब्जेक्ट। तो मैं पूछूंगा कि आप अगर मान लीजिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, व्हाटएवर यू आर टीचिंग, तो हाउ यू आर गोइंग टू इंक्लूड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ओके, डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो कोई आंसर बताइए, डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या हो सकते हैं? तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि क्या आप कहां से पढ़ाते हैं? जोर से बोलिए। अरे आप पढ़ाते हैं ना, तो कहां से पढ़ाते हैं जी? आप जो गई यार, आपको सब मालूम है यार। आप देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, और सोचो आप विश्व गुरु बन चुके हो। आप आंसर करना शुरू करो। हाँ जी, बताइए। अरे वेरी गुड यार, सिंपल सी बात है, देखो सांस लेने में एकदम आंसर आ गया। ओके, तो दिस इज द नॉलेज ऑफ आईपीएस, इसको बोलते हैं, ठीक है? तो अब बात ये आती है बुक्स। तो बुक्स की जगह अब डिजिटल क्या होंगी? वेरी गुड, ई बुक्स। ई बुक्स। So now books तो ठीक है, they are already mentioned. Now you have to mention the e-books. What else? E-books के अलावा, हाँ जी? Virtual apps. एक मिनट सर, एक मिनट, बहुत अच्छा। मैं इसको अभी थोड़ी देर क्लियर कर रहा हूँ। आपने सही आंसर है। पर e-books के अलावा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ओके? Then maybe your some videos, है ना? क्विज़ेस वगैरह, जो भी आप इंटरेस्ट उसके अंदर डालना चाहें, वो सब उसके अंदर बेस्ट कीजिए, बच्चों को बताइए, ठीक है? और फिर when it comes to lab, सर का बहुत अच्छा था वर्चुअल लैब्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर लैब्स, आप वर्चुअल लैब्स को भी यूज करें। और फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी, जैसा सर ने आपको बताया, जस्ट गो थ्रू इट, वेबसाइट में डाल दीजिए, 23 डाल देंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। एंड व्हाटएवर रिलेवेंट टू योर कोर्स, नॉट ऑल, बट व्हाटएवर रिलेवेंट टू योर कोर्स, उसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। अब वैसे एनईपी 2020 ने ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ है, पर वन एडिशनल थिंग यू कैन हैव। ओके फ्रेंड, अदर थिंग इज ग्रीनिंग। ओके, ग्रीनिंग इज इकोलॉजी, है ना? एनवायरमेंटल जो इंपैक्ट है वो आपको देखना है, तो उसको भी आप अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड करें अगर कर सकते हैं तो। इंडस्ट्री 4.0, अभी तो सर तो 5.0, सर ने तो एजुकेशन 5.0 के बारे में बात करी, दैट इज रियली वेरी गुड, पर एटलीस्ट 4.0 तो आप जरूर करें। ऑटोमेशन, है ना? तो वो सारी चीजें, डिजिटल, वो सारी चीजें, एआर, वीआर, एमआर, एक्सआर जो बताया, सब आपको आना चाहिए। फिर देन इट कम्स टू स्किलिंग, हमने बात की, आप देखेंगे कि दे शुड लीड टू डू इट। फिर दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है डिजिटल। ओके, तो डिजिटल में एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, सोशल मीडिया। क्या है? व्हाट इज सोशल मीडिया? यूट्यूब और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, वो सारी चीजें। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे टूल हैं और आपको उनको यूज करना है। असाइनमेंट, जितने भी आप टास्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, सबको बोलिए मेक अ वीडियो, फोटोग्राफ ले या जो भी होता हो, और जस्ट अपलोड इन सोशल मीडिया।
और सोशल मीडिया पे अपलोड करने के मार्क्स भी दे दो आपको, तो सब करेंगे एंड यू विल फाइंड अ ड्रास्टिक चेंज। अगली बार वो आएगा, सर दूसरा सेगमेंट दे दीजिए सर, 200 लाइक आएगा वहां पे, अब मुझे लाइक और चाहिए। तो हम तो ये जो अंगूठे को अंगूठा दिखाना बोलते थे, आजकल तो ये मोटिवेटर हो रहा है बहुत बड़ा। ओके, जितने लाइक मिलेंगे सो पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड आई नो इट्स रियली वेरी difficult to motivate people and that is how you can use the social media in your curriculum. Experiential learning क्या है ये कोई बताइए, बहुत अच्छे से आपको मालूम है ये क्या होता है experiential learning? वेरी गुड। लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा सा सर में क्या होता है, जैसे हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं तो देन वी कनेक्ट टू लैब और फिर हम लेबोरेटरी पे जाते हैं, पर हम उसको लेबोरेटरी से नॉट कंसिडर टू लेबोरेटरी, जो हम वो तो है ही, दैट इज ऑलवेज देयर एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग इन लेबोरेटरी, बट व्हाटएवर वी आर कंडक्टिंग ओवर हियर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हम प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन कराएं दैट एक्चुअली डू इट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। एंड देन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब हम महाराष्ट्र में आते हैं, जैसा मैडम ने बोला और सर ने भी बोला, पूरे सर ने कि दे आर फर्स्ट टू इंप्लीमेंट, और दूसरी बात ये है कि हमें टॉप में रहते हैं, व्हेन वी गो टू डिफरेंट स्टेट्स तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे। तो बताइए लास्ट ईयर जब ग्लोबल टीचर अवार्ड मिले तो महाराष्ट्र के एक स्कूल टीचर को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। दिल से, अब मैं तो दिल से ही बोल रहा हूँ। याद आया? देखा है सबने? सरकारी टीचर, स्कूल का टीचर, गांव में टीचर, विदाउट एनी रिसोर्सेज ले गया ग्लोबल अवार्ड। और क्या किया उसने? एक लैपटॉप का कमाल था और डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल था। He has connected his students globally। वो गांव के जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, वहां के स्टूडेंट से कनेक्ट करके और वहां से उनसे बात करते हैं और वीकली उनसे इंटरेक्ट करते हैं। दे हैव मेड कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस। तो क्या हम नहीं कर सकते? करेंगे? एक बार फिर से बोलिए, करेंगे? वेरी गुड, दिस इज द स्पिरिट। ओके, एनईपी 2020 यही बोल रहा है। और दोस्तों, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बताया था, तो ये समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज द थ्योरी बिहाइंड लर्निंग। बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हुई है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। हमने और जो आपने पढ़ी हुई है वो एक अलग, टीचर पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे, हम पास होते थे, वो टीचर नहीं पढ़ाए तो शायद फेल भी हो जाए। बट टुडे आई थिंक दिस इज नॉट द सिनेरियो। आप पढ़ाओ या ना पढ़ाओ स्टूडेंट को, ना पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा करेंगे। नहीं, आप पढ़ाओ या ना पढ़ाओ फिल्म में स्टूडेंट को पास होना ही है, पास होना ही है, ठीक है ना? फिर पढ़ाना क्यों? नहीं, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। आप क्या करो, क्योंकि ये क्यों हो रहा है? नाउ स्टूडेंट वांट्स टू कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज। जो पैसिव होता है ना, मैं एक्टिव हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, वो पैसिव, वो उसको नहीं चलता, ओके? ही वांट्स टू बी एक्टिव। सो इसलिए क्या है कि आपको कंस्ट्रक्टिविज्म व्यूज लर्निंग एज अ प्रोसेस इन व्हिच द लर्नर कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो कुछ करेंगे और कुछ लर्न करेंगे, ओके? द टीचर ओनली एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर। जो मैं आपको बोला था, ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यू गिव देम ओनली अपॉर्चुनिटी टू हैव द एक्सपीरियंसेस, और भाग खड़े रहो, ठीक कर रहे हैं कि नहीं करना है ना? खासकर इलेक्ट्रिकल वाले झटका लगता है, समझ रहे ना? बाकी तो ठीक है, मतलब वी हैव टू बी अलर्ट कि कहीं ऐसा नहीं कुछ हजार्डियस हो जाए, क्या कर दे में गो रॉन्ग, है ना, मशीन के अंदर। सो अच्छा, अब एक चीज तो इंपॉर्टेंट है, नहीं क्या सर, मैं मतलब क्योंकि इंडस्ट्री में काम कर ले रहा है, वर्क फॉर होंडा, और कई साल काम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग फॉर होंडा, एंड देन आई केम टू टीचिंग, और फॉर आई taught like you for 21 years, and then I have come to Nitro Gopal, so मेरे पास सारा एक्सपीरियंस है, ओके? तो मैं बता रहा हूँ, फैक्ट्री में एक आदमी सेट करने गया तो हाथ के साथ पूरा का पूरा रोलिंग में चला गया, और आगे क्या निकली उसकी चटनी। That happens, and unfortunately he was the factory manager, okay? तो खैर anyway, those are accidents. तो learners, अच्छा, तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग समझ में आया, उनको खुद करके देखने दो। YouTube में डालिए, बहुत से अच्छे आपको मजा आएगा वीडियोस हैं। और दूसरा बात आया, लर्नर्स में कोलैबोरेट। क्या होता है दोस्तों, एक बात तो पक्की है, आप अभी अपने बगल वाले टीचर से बात नहीं करते हो, करते हो क्या?
करते हो टीचिंग लर्निंग के बाद? इतना सुपर झूठ भैया, ये नेशनल डे का है, महाराष्ट्र का नहीं। कोई बात नहीं कहो, खासकर मेरा मेरा सब्जेक्ट ये क्या बताएगा? सही है ना? वो दिन गए, वो दिन गए। हाँ, इवन डिपार्टमेंट भी चेंजिंग, डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे, सिविल मैकेनिकल, ओके, ये भी तो बहुत समय बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो द पॉइंट इज वी हैव टू कोलैबोरेट। खैर एनीवे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा था। स्टूडेंट शुड कोलैबोरेट, लेकिन जब टीचर नहीं करेगा तो वो ही देखता, वो भी नहीं करता है। तो यू आल्सो स्टार्ट कोलैबोरेटिंग। जैसे मैडम ने बार-बार करी थी मल्टीडिसिप्लिनरी, तो वो लोग बोलते हैं सर हम मल्टीडिसिप्लिनरी कैसे करें, हमारे डांस वाले नहीं है, हमारे यहाँ वो म्यूजिक वाले नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है। अरे भैया, सिविल वाला मैकेनिकल में करे ना, मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल में करे, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स में करे, तीनों मिलकर करे, इतना तो कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन हैव अ स्टार्ट, तो दैट इज कोलैबोरेशन। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ये बोलती हैं कि अगर स्टूडेंट साथ काम करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। और फिर थ्योरी आई सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं, कनेक्टिंग विद द सोसाइटी। एनईपी 2020 के पहले इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट विद ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज़ दे वर सपोज्ड टू बी प्राइवेट। तो गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन आता था कि आपने वो ब्लाइंड डेट क्या कैसे स्टूडेंट्स को भेज दिया, things like that. But NEP 2020 now says that every institute, every department should have enlisted 15 to 20 such organizations where they will send their students. तो पहली बात तो आपको ये काम करना है कि ऐसे philanthropic और social organization की लिस्ट करना है। तो बताइए फटाफट मेरे को कौन से हो सकते हैं such kind of philanthropic charitable organizations? बताइए, social organizations। रोटरी, बेसिकली सरकार, सब सरकार आज तो ओके। तो भैया आप ही बोलो ना, सर ने दो बता दिए है ना, लायंस, रोटरी और व्हाट, उसको भी मान लेते हैं। और वो सर वो क्या होता है, वो प्रोफेशनल में आ जाता है ना, प्रोफेशनल में आ जाता है। अरे यार, ब्लाइंड होम्स, ओल्ड एज होम्स, फिर डेफ एंड डम स्कूल्स, है ना, कुछ ऐसे जो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, थिंग्स लाइक दैट, ओके। तो ऐसे आपको, और जो सर ने बताया वो प्रोफेशनल्स, लायंस, रोटरीज वगैरह के आप जाएंगे तो बहुत अच्छे कनेक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया सर ने। तो क्या होगा कि ऐसे आपके पास लिस्ट होना चाहिए और सोशली वहां पे प्रॉब्लम आप देखिए। एक और काम हो सकता है, इफ यू आर इन हैव अ नियर बाय रूरल एरिया। मान लीजिए अभी मैडम अंजू मैडम ने बहुत अच्छी बात की थी कि वो महाराष्ट्र कौन सा है जी, उन्नत महाराष्ट्र, वो आपको उन्नत महाराष्ट्र के अंदर बहुत काम करेगा। यू कैन टेक अ नियर बाय विलेज और उसको एज अ इंस्टीट्यूट आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए। उसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सब ने बहुत अच्छी बात बताई थी, मेजरमेंट के बारे में कल बात बताई थी राव साहब ने कि मेजरमेंट का गवर्नमेंट ने करा दिया है कि यू मेजर ऑल द थिंग्स, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनको समझिए। मैंने आपको बताया था ये सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, तो उनको अंडरटेक कीजिए, है ना, और धीरे-धीरे उनको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। सो अगेन दैट विल बी अ गुड स्टेप। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज आल्सो वन ऑफ द एडवांस्ड थिंग, ओके। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं, जर्नलिंग, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज। जर्नलिंग का मतलब क्या होता है, व्हाटएवर दे डू शुड राइट। आपका वाला जर्नलिंग, वो वाला जर्नल की बात नहीं हो रहा है, ओके, वो जर्नल नहीं है। ये जर्नल का मतलब होता है व्हाटएवर दे आर डूइंग दे राइट। तो कौन राइट करता है आज के टाइम में, तो राइट नहीं करता। कहां राइट करता है, एग्जाम में राइट करता है बस। लेकिन दूसरा क्या करता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो करो ना, उसी में राइट करो, उसी में रिकॉर्ड बना रहा है, उसी में उसका जर्नल बन रहा है। तो यूज सोशल मीडिया इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ओके। सो एक पर्सनल फोकस एंड कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एनईपी 2020 says that apart from all this one should have collaboration, two people working together, okay, and cooperate, exchanges. So ये एक important चीज है, and you will find that very once you in social constructivism collaborative and cooperative learning would increase, and that will help in their employment also. नाराज हो गया भाई, ओके, नहीं ठीक है, छोड़ रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं। पहले की थ्योरीज जो हमने पढ़ा वो बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म थी, लेकिन जो अभी जो चलेगा वो कंस्ट्रक्टिविज्म है ना।
डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया कि आपको डिजिटल स्टूडेंट को डिजिटल से भी बनाना है, तो मैंने भी आपको डिजिटल से भी बना दिया। मैंने आपको वेबसाइट्स इसलिए दिए हैं कि सच काइंड ऑफ वेबसाइट जो भी आप कुछ करें तो हमेशा इस प्रकार से एग्जांपल, ओके, सो दे शुड बी एबल टू नो मोर अबाउट इट एंड एटलीस्ट फ्यू पीपल वुड बी नोइंग मोर। ओके, अच्छा, तो समराइज कर रहा हूं। कंस्ट्रक्टिविज्म में स्टूडेंट क्रिएट देयर ओन नॉलेज, आपको बताने की जरूरत नहीं। एग्री करते हो इस बात पे? दुख होता है ना? होता है, एज अ टीचर मुझे भी होता है कि यार मेरी वैल्यू, ठीक है, लेकिन प्लीज खून का घूंट पियो, फायदे देखो क्या है। स्टूडेंट के लिए वो जॉयफुल होता है, नहीं तो बड़ा पेनफुल होता है। अरे यार 1.5 घंटे इसको झेलना पड़ा, 40 मिनट 60 घंटा कितना, 60 मिनट 1 घंटा झेलना पड़ेगा, तो चलो यार अटेंडेंस मिल जाएगी। that kind of approach is there। पर जब वो खुद काम करते हैं तो that is joyful, उन्होंने खुद ने किया हुआ है। and pleasure of discovery, आपने बताया तो सर ने बताया, लेकिन जब वो खुद करता है तो उसको खुद आएगा, कल आएगा, सर आई डिड दिस, मैंने इसको उसमें ऐड किया एंड ये दिस वाज द फिनोमेनन, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। सेम थिंग आप बताएंगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट ही डिस्कवर्स ही दैट इज नोन एज डिस्कवरी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अंजू मैडम ने बहुत अच्छे से बता दिया है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो आप सभी समझते हैं कि निरंतर पढ़ते रहना, बट व्हाट हैपेंस, जैसा मैडम ने बताया आपको कि फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to inculcate the habit of independent learning and self-directed learning now. Jaisa madam told that you should know what are the websites and other books where things will be available. So you should give some things to the student, they will do it. Okay. फिर associate society problems मैंने आपको बताया where it is application. Friends, if you are teaching something, अच्छा पहले ये बताइए जो आप पढ़ा रहे हैं उसका सोसाइटी में एप्लीकेशन है कि नहीं डायरेक्ट? कोई एक टीचर खड़ा होकर ऐसा बताया मुझे कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है, दिस इज माय सब्जेक्ट एंड दिस इज नॉट डायरेक्टली दिस सब्जेक्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड। कोई ऐसा है? अच्छा है, नहीं होता तो हम उसको करिकुलम से बाहर निकाल देते। सो अब आप ये नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा सब्जेक्ट डायरेक्टली अप्लाइड नहीं है ना सर, मेरा तो फंडामेंटली है सर, बेसिक है, वो से निकाल आएंगे। अरे बेसिक हो चाहे एसिडिक हो हमें मतलब नहीं है। पॉइंट इज इट शुड बी अप्लाइड। ओके, और फ्रेंड्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसा पहले बोला हमने फर्स्ट सेमेस्टर से इट शुड स्टार्ट, है ना? बहुत खराब, चलो ओके। 6 स्ट्रेटजीज ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग: स्टूडेंट एक्टिविटी एंड टास्क परफॉर्मेंस, मीनिंगफुल इंटरेक्शंस, कोलैबोरेटिव टीम बिल्डिंग, ऑथेंटिक असेसमेंट। Many a times madam has told कि assessment is very very important, so maybe constructivism, maybe social constructivism, assessment is very very important, and integration of information skills and achievable challenging tasks। हमेशा ये दो टास्क मैडम क्या चाहिए? पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, क्या चाहिए? बैग चाहिए मैडम, कुछ चाहिए? हाँ बैग चाहिए, मेरी परमिशन है आपको। तो अचीवेबल चैलेंजिंग टास्क, सो इंपॉर्टेंट बात ये है कि चैलेंज होना चाहिए। चैलेंज इज अ वेरी बिग मोटिवेटर। आपके एचओडी कितना आप लोगों को बैक में करते हैं, प्रिंसिपल भी करते होंगे बेटे यहाँ पे। कौन देखते हैं किसमें दम है ये करने का? 4 लोग खड़े हम करेंगे, बोले आ जा, नॉट बैड, हमारी स्किल्स बढ़ती है ना। आप उतना ही काम कर रहे हैं और उतना ही काम करते रहेंगे तो क्या कैपेसिटी इंक्रीज होगी? सो इनफैक्ट योर प्रिंसिपल्स और एचओडीज they are giving you a chance to excel। हो सकता है you may require more effort, but long run में आप देखेंगे वो आपको प्रमोशन के लिए तैयार कर रहे हैं। Okay, so that is why, okay, so friends, very important, once you stop learning you start, सोच लो। और हेनरी फोर्ड ने क्या बोला? Anyone who stops learning is old। और आप तो हमेशा जवान रहना चाहते हो। Okay, so every day, every day, every week at least learn some new thing and make a diary of it। Okay। और नीचे लिखा हुआ है anyone who keeps learning stays young। ये मैडम ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, so I will not cover। So जब आप कोर्स प्लान बना रहे हैं
तो एनालिस द कोर्स आउटकम्स, बहुत अच्छे से मैडम ने आपको बताया है कि कोर्स आउटकम्स कैसे बनाना। मैडम ने टोल्ड यू दैट आफ्टर डूइंग कंप्लीटिंग द कोर्स व्हाट इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स, व्हाट ही वुड डू। आप बोलेंगे सर स्टूडेंट है कहां जाएगा क्या करेगा, ये भूल जाओ। क्या करेगा बताइए, वंस यू कंप्लीट द कोर्स तो क्या कर, तो इंडस्ट्री जाके क्या करेगा, सिंपल आंसर लिखेगा, डेरिवेशन निकालेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, ये करेगा ना, करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, आप तो ये करवाते हो। तो क्या करेगा भाई वो, देखो इंस्टॉल, इरेक्ट, कमीशन, ट्रबल शूट, है ना, प्लान, समझ रहे, डिजाइन, रेडी। सो उस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया है उस प्रकार सेलेक्ट, ओके, हाँ वेरी गुड, सर ने बोल दिया स्किल। तो आपको देखना पड़ेगा एवरी यूनिट, ऐसा नहीं कि 5 यूनिट्स हैं तो 4 दे करके एक छोड़ दिया, अरे बहुत हो गया यार, ऐसा नहीं। और जो मैंने आपको मैडम ने बताया वैलिडिटी का प्रॉब्लम आएगा। सो ऑल यूनिट्स शुड हैव ए CO। ओ सॉरी, कुछ सेलेक्ट TLOs एंड एनालाइज अलाइन टैलेंट है, तो ये भी अच्छी बात है कि TLOs जो है वो आप उसको लें, उसको एनालाइज करें, क्योंकि कोर्स आउटकम, एक कोर्स आउटकम को मतलब CO1 है उसको अचीव करने के लिए हो सकता है जो रिक्वायर 3 और 4 तो वो करेंगे। आइडेंटिफाई लर्निंग रिसोर्सेज, मैंने आपको बता दिया लर्निंग रिसोर्सेज कौन-कौन से हैं, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट लर्निंग रिसोर्सेज शुड बी फ्रॉम इंडस्ट्री, ठीक है। इफ यू डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, सो इट कुड बी इंडस्ट्री, so that is also one important thing। And decide the design pedagogies, which experiential learning जो कि ज्यादा होगी, which is demonstration, है ना, कुछ हो सकता है केस स्टडी बेस्ड, कुछ हो सकता है फील्ड विजिट, ओके। सो यू हैव टू इंक्लूड ऑल दिस, और अभी आप तो जैसे करते हो तो वो ड्रॉप डाउन में आ जाती है सारी पेडागोजीज, है ना, सो वो सब आ जाती है। सो बट यू हैव टू चूज which is the best, ऐसा नहीं कि ड्रॉप डाउन में आ गई तो सभी लिखती, सो यू हैव टू चूज द बेस्ट, ओके। देन डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट सिस्टम। अब नाउ अगेन LLB से पूछ रहा हूं आप लोगों से, ये बताइए कि व्हाट कम्स फर्स्ट, टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट? जी क्लासेस, ये टीचिंग लर्निंग, उधर से ठीक है, यस, जो आप जो प्रोजेक्ट ऑर्डर में बता रहे हैं तो वो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे once the course is being allotted to you, okay, you should finalize the COs and how you will assess those COs। तो असेसमेंट आपके दिमाग में पहले होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट टीचिंग, एंड देन यू हैव टू टीच व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न एंड परफॉर्म इन द असेसमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। Assessment comes in the last, but you have to pre-plan what you are going to ask. It should be in your mind, and accordingly you have to teach. Okay. So ये पूरा हो गया। उसके बाद implement the core plans, implement करेंगे आप, implement करना शुरू किया, करना शुरू करेंगे। So बहुत सारी activities होंगे। कौन-कौन सी activities होंगी बताइए? What would be different activities experiential learning की? जी सर? Demonstration. Very good. Demonstration सर ने बोला, कहाँ demonstration पे होगा? कहाँ होगा? वेरी गुड। देखो लैब का ऑब्जर्वर में मैंने आपको बताया, सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं तो सोसाइटी के अंदर सोशल कनेक्टिविज्म में आपके जो 5 डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज हैं जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मे बी फाइनेंशियल के बारे में बात हो सकती है ना। सो देयर आर एम्पल, अभी मैंने आपको एक विलेज एडॉप्शन का एक एग्जांपल दिया, तो वहां पे आप दैट यू कैन डू। एनएसएस आप लोग जो बोल रहे थे, एनसीसी आप लोग बोल रहे थे, वो भी उसके अंदर है, और वो जो रेगुलर है इसलिए मैंने स्किप कर दिया, दैट यू ऑलरेडी नो। सो इवैल्यूएट दैट। अच्छा, फिर आप उसको इवैल्यूएट करेंगे कि जो हमने कोर्स प्लान बनाया वो ओके था या दैट इज सडन चेंजेस। सो वो कुछ चेंज हो सकता है, टेक करेक्ट एक्शंस फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। जब फिर से बनेगा तो हम उसको चेंज करेंगे। सो कुल मिला के बात क्या है? क्रिएट इंटरेस्ट, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनको कॉम्पिटिशंस भी लीजिए डिफरेंट, और नहीं है तो यू हैव कॉम्पिटिशंस विद इन द क्लासरूम, है ना, विद इन डिफरेंट सेक्शंस, विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। So competition is also a very good motivator because it is also a challenge. So designing actual activities आपने बताया, best from best ये बात हो सकती है।
अच्छा इवन जैसे ड्रामेटिक्स, डिबेट, ओवरऑल पर्सनालिटी, होलिस्टिक, बार-बार मैडम बोले कि होलिस्टिक, तो होलिस्टिक के लिए ड्रामा, डिबेट, ये सारी चीजें भी उनको करते आना चाहिए, सिंगिंग एक्सेट्रा। ओके, गाइड एंड फीडबैक for the students at critical learning points. So as a facilitator, as a mentor, आपको क्या करना पड़ेगा? Critical points पे you have to be there. So what should be the environment? जब बच्चा आए, he should be so much thrilled कि I don't want to miss the class. आज मैंने class miss कर दी, so I will lose one of a very big opportunity. Okay? तो इतना environment अच्छा होना चाहिए, and it should be positive, encouraging, challenging, and competitive. So हमने काफी सारी बातें करी। ओके, देख लीजिए। So again, there are the roles which you have to perform. We have talked about it. A wise man never knows all, only fools know everything. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले मैंने पॉजिटिवली आपको मोटिवेट किया था, लेकिन ये भी नहीं मुझे मिला। तो अगर मुझे सब आता है, अगर मैं मुझे ये सब हम क्यों कर रहे हैं? फ्रॉम स्टूडेंट्स को वी आर मेकिंग जॉब रेडी, कैंपस को ऑर्डर रेडी, है ना? ये ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा रहना चाहिए कि 21st सेंचुरी लर्नर स्किल्स हैं, जो आपको बहुत सारी चीजें एज अ कोलैबोरेटर, है ना, मीडिया उसको करके आना चाहिए। यू शुड बी क्रिटिकल थिंकर, प्रॉब्लम सॉल्वर। ये मैडम ने भी स्लाइड बताई थी। अगेन मैं इसमें ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, बट 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं ये आना चाहिए। ये भी मैडम ने कवर कर लिया था।